जय जगन्नाथ व्यूअर्स एटा होची पार्ट 2 आपण मानकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो एमसीक्यू सीरीज रो पार्ट 1 ने हमें कांसेप्ट सहित किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिले एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 ओके सो स्टार्ट करियो वीडियो सो स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हम समस्त जानि छे जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ओके नेक्स्ट कम टू question number 2 under which of the conditions does the emotional and social development okay emotional and social development of a child occur in positive manner okay so that is when child is considered as important and his feelings are respected जेतेबेले ताको importance दिया जिवो आउ तार feelings को respect करा जिवो only learn पई कोहा जिवोनी ताको गुड मार्क कर देले भी हबो नहीं अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल पढ़ेले भी हबो नहीं ओके नेक्स्ट कम टू लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे चिल्ड्रन रो काहा ऊपर डिपेंड करे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऊपर डिपेंड करे बेटर स्कूलिंग ऊपर डिपेंड करे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड रो फ्रीडम ऊपर भी डिपेंड करे सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट ओके इमोशनल डेवलपमेंट को फैक्टर इन्फ्लुएंस करे दैट इज फिजिकल हेल्थ मेंटल एबिलिटीज फैटिग सब किछि हमरो मेंटल बा इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करे correct answer to this question is all of the above next what is the meaning of growth what is the meaning of growth change related to result no measurement देखो measurement term जोठी आसो माने आपण माने बुझिबे सेठी growth पाई okay measurement term always related to growth so change related to measurement is the meaning of growth next come to which statement about growth is correct growth विषय रे को sentence ता हमरो correct that is sharp growth rate is seen at the time of sports in height yes right adolescence time रे ही हमरो देखा जाए retarded physical development retard social development too ठीक अछि the rate of growth during infancy and pre adolescence is very high ठीक अछि growth ता आपनकर प्री एडोलेसेंस आउ इन्फेंसी स्टेज रे ही बेसी हेथाय सो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव देन फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड देखंतु जो एरिक्सन करो जो 8टा स्टेज कहिथिले ता भितरु आपनकर सेम एंड प्राइड को एज रे डेवलप करे सेम एंड प्राइड को एज रे आपनकर डेवलप करे दैट इज ऑप्शन नंबर 2 चाइल्डहुड रे ही आपनकर सेम एंड प्राइड डेवलप next question which of the following is not a difference between growth and development भितरे कोटा difference नुहे development enables growth but growth does not enable development एटा ही difference नुहे okay growth is only physical whereas development means overall ठीक growth is easier to be measured than development this is also right and development is lifelong whereas growth stops after attaining certain maturity एटा भी ठीक बट जो डिफरेंस ता आपनकर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट भितरे नाही दैट इज डेवलपमेंट एनेबल्स ग्रोथ बट ग्रोथ डज नॉट एनेबल डेवलपमेंट दी जन को आपनकर ग्रोथ एनेबल्स एटा उल्टा दे देचे डेवलपमेंट एनेबल्स ग्रोथ नो ग्रोथ एनेबल्स डेवलपमेंट हेतिले एटा ठीक हे थांदा ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन ए डिफरेंस ता नो Then next question which of the following is not a matter relating development to learning okay both learning and development are reversible process second कहूची is not देखंतु सब बेले आपनकर कोठी नॉट ऑप्शन थिबो सेटा आपन को खोजिबा को पड़िबो न हले भूल ऑप्शन मार देबे which of the following is not a matter of relating development to learning कोटा learning आउ डेवलपमेंट भितरे
रिलेट करूनी को सेंटेंस टा देखंतु लर्निंग इनिशिएट्स डेवलपमेंट थ्रू आउट सोशल इंटरेक्शंस एकदम ठीक लर्निंग एंड डेवलपमेंट अफेक्ट इच अदर भी ठीक बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस एटा भी हमें कहबा ठीक बट जदि हमें कहूचे जे बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस नो डेवलपमेंट आपनकर केबे भी रिवर्सिबल प्रोसेस नुहे लर्निंग भी रिवर्सिबल प्रोसेस नुहे सो दिस ऑप्शन इज नॉट a matter relating development to learning okay so this is your right option then the difficult age of development is development ro सबुठारु difficult age होउची कोटा teenage जानि चंदी समस्ते easy question then adolescents get pleasure adolescents कोथुरु प्लेजर पांती इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स जानिचे संग माना सहित संग हेले से माने खुशी होंती examining their body structure and physique एथरे भी खुशी होंती then in the company of opposite sex रे भी मध्य खुशी होंती so your correct answer is all of the above then next question the most appropriate meaning of learning is देखंतु एटा आपनकर very important question आको आपण आज इट इज पूरा रट्टा मारला भलिया पूरा मन रखि दियंतु एटा सब एग्जाम रे प्राय एटा पचारे आ एटा को पूरा आपन मन रखिया पई पड़िबो जे लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पूरा सेंटेंस ता ही पड़े लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ऊपर क्वेश्चन सारे कंफ्यूज हेबेनी सेठी पचाला लर्निंग रो मीनिंग एठी पचाउची लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ठीक अछि रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बे कुहा जिवो लर्निंग बोली देन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एटा भी लर्निंग सो ये तीनटा जिनस हमर लर्निंग रिलेटेड ठीक अछि तो लर्निंग इज ऑल ऑफ द एबव देन ए सब आपनकर पीवाईक्यू थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी कंसीडर्ड एज ए फीचर ऑफ लर्निंग लर्निंग रा फीचर कोटा नुहे लर्निंग इज समथिंग दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस देन स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग से कुछ कोन को स्टेटमेंट है कांट बी कंसीडर एज ए फीचर ऑफ लर्निंग नुहे स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग अनलर्निंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट mediates behavior which of the following statement cannot be considered as a feature of learning feature of learning हिसाब रे कोटा निया जीवनी लर्निंग रो फीचर नु एटा होची लर्निंग रो मीनिंग स्टडी ऑफ बिहेवियर ओके human development is based on certain principles which is general to specific okay human development सब बेले general to specific हेई थाए एटा भल से मन रखिबे एटा भी important question गोटे आपण मानन पई next question आपण करो which of the following is not related to principle of growth and development तो principle of growth and development जदि हमें कहिबा कोटा आपनकर रिलेटेड नुहे को प्रिंसिपल टा आपनकर रिलेटेड नुहे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ओके दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देन स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस ओके कंसीव करबा बेला ठारो एडोलेसेंस एज पर्यंत ही चाइल्ड साइकोलॉजी रो स्कोप कंसीव करबा टाइम रो एडोलेसेंस पीरियड पर्यंत ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल देन एटी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु एटा केस बेस क्वेश्चन भले आपनकर पकाए नरेश एंड मुकेश आर इन द सेम एज ग्रुप दी जन जाको पिला सेम एज ग्रुप रे अछंती दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट किंतु सोशल आ मेंटल डेवलपमेंट सेमानकर भ्यारी करूची इट इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटा कहा जोगु दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी तांकर इंडिविजुअलिटी रे फरक रहिची सेथि पई सेमाने सेम एज ग्रुप रो हेले मध्य सोशल आउ मेंटल डेवलपमेंट रे सेमानकर डिफरेंस रहिची ओके नेक्स्ट कम टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग इंपोर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ओके तो चाइल्ड रो
development रे which principle is not giving importance, that is principle of social cognition. Then understanding the principle of development of a child helps a teacher in गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट को बुझिबा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बुझिबा रे गोटे टीचर को अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स ए टीचर गोटे पिलार प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बुझिले टीचर को प्रकार हेल्प मिले इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ए लर्नर. से तार लर्निंग स्टाइल को कैच करि परिबे इफेक्टिवली ताको कैटर करि परिबे जे को पिला को स्टाइल ले ताको टीचिंग दिया जिवो, से केमिति लर्न करूछि, को स्टाइल ले से लर्न करूछि, को भली ताको टीचिंग देले से भलो से इफेक्टिव हे परिबो. देन स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज, स्कोप ऑफ स्टडी of a child development is study of different stages of child development. ठीक है, study of effect of environment on child development, study of individual differences, so all of the above. So scope of study of a child development is all of the above. Then which of the following is an internal factor of child development? Child development रो जदि internal factor आमे कहिबा that is intelligence हबो आपनकर, hereditary factor भी हबो and physical activity भी हबो. So your correct option is all of the above. The next question, which of the following is a true statement corresponding to cephalopoda principle of child's development? तो cephalopoda कहले सब बेले आपनकर foot to head बोली बुझिबे. ओके, एटा उठी zoological term. On the basis of child psychology, which statement is appropriate? Child statement अनुसारे कोउटा आपनकर appropriate, that is every child is unique. This is also important and जेमते आपनकर learning कहितली modification of behavior घोषि देबे सेमते एटा को भी घोषि देबे every child is unique, that is the appropriate statement of child psychology. Then central focus of child psychology is obviously the child. Focus रे के रहइबो child psychology रे child ही रहइबो. Then which of the following is an external factor of development? Development रो जदि external factor आमे कहिबा life experience, social condition, economic condition, all these are the external factors. Internal factor आपनकर कोन कहितली, hereditary कहितली, physical कहितली. ओके, तो external condition कहले आपण मानकर एई गुडे को बुझौची economic condition, social condition and life experience. So your correct option is all of the above. Then development is sequential and slow process. Which among the following thinkers is associated with this thought? ओके, देखंतु आपनकर बेले बेले स्टेटमेंट दे दउची आ एटा किए कहिथिले बोली की, तो एटा कहिथिले कि आपनकर स्किनर. तो मोस्टली आपन देखिबे क्रो एंड क्रोंकर स्टेटमेंट मन दउची, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, देन आपनकर स्किनर, मस्लो, एमते के जनकर स्टेटमेंट टिके घोषि देबे. स्टेटमेंट दे दउची सीधा तापर पचाउची कि आकु कहिथिले बोली. ओके, then development is never ending process. With which principle of child development can this thought be associated? Development is continuous. Development is a never ending process. With which principle of child development can this thought be associated? Never ending means आपनकर 8 ही आंसर रहिछि, development is continuous. Then a mother observes that one of her twins has learned to walk faster. Okay, learn to walk faster. दी जन twin को भितरु जने जल्दी चालुछि. This difference in learning is related to which principle of development? तो दी जन twins अछंती, तांका भितरे जदी जने जल्दी जल्दी चालिबा सिखुछि अर्थात से आगे चालुछि, ताहले आमे ताको कोन कहिबा, डेवलपमेंट proceeds at different place of different people. Different people को पाखरे different time रे आपनकर डेवलपमेंट हेई थाए. Sita has learned to eat rice and dal with her hand by seeing another girl doing the same. Which principle of development is not associated with this?
इज एसोसिएटेड सॉरी नॉट सीता कौन करुचे ना लर्न करुचे राइस आउ डाल खाइबा निज हाथ रे खाइबा से शिखुची आउ जन को फॉलो करिकी तो एठी तार एठी को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ता काम करूची दैट इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग से लर्न करूची केमिति हाथ रे राइस आउ डाल जने खाउची आ मु ताको देखि करी खाइबी सेटा से लर्न कला सो दैट इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग ओके सो आशा करे ये क्वेश्चन गुडी को आपण मानन को निहाती हेल्पफुल हेतबो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट करिया पई नेक्स्ट वीडियो आमे आपनकर जो डिफरेंट थ्योरी रहिला भाइगोट्स्की पियाजेस आपनकर कोहलबर्ग एई भली डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मानकर गोटे गोटे वीडियो बनेबा जहार के पूरा एमसीक्यू आमे कवर करबा और सेटा आपन को एग्जाम रे बहुत ही हेल्प करबो त आशा करे वीडियो जदी भल लागिथिबो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करे संग साथी सहित शेयर करबे।